Namaste Gurukulians, how are you students? Hope you will be fine. Today we will study class 11th accountancy and chapter 6 GST is going on. So we will continue the same chapter. This is part 3, third video. We have done question number 1 and 2. Now we will start from third question. So we will do third illustration. See, open the book, D.K. Goyal. This is illustration number 3, page 10.10, illust 3. Page 10.10. So first of all, prepare the format of journal. Question is, enter the following transactions in the books of Lakshmi Traders, assuming that all transactions have taken place in the state of Rajasthan. So it is a case of intra-state sales. We will open CGST and SGST account. Assume CGST at 9% and SGST also at 9%. The date is 2018 March 5. Purchase goods for rupees 5 lakh from Chauhan Traders at 20% trade discount. So deduct 20%. 20% of 5 lakh is 1 lakh. The goods are purchased for 4 lakh. 5 lakh minus 1 lakh trade discount. Entry will be purchase account debit. $4 lakh. We will open input CGST account debit 9% off on this amount 36,000. Input SGST account debit same amount to supplier. Supplier is Chauhan Traders. To Chauhan Traders 4,72,000. Okay, write the narration, goods purchased and GST paid. Next, March 10. Sold goods to Puskar Brothers for rupees 3,20,000. So debit the receiver, it is credit sales, Puskar Brothers debit. To sales. Sales is rupees 3,20,000. GST is 9% each. So it is income. You will open output. To output CGST account and to output SGST account. To calculate 9% on this amount, it will be 28,800. So debit the total Puskar Brothers. So it will be 377,600. Okay. This is the entry for sales. Write the narration, goods sold and GST collected. Next, on March 15. Received from Puskar Brothers a check of rupees 2 lakh on account. Check is sent to bank. So bank debit to Puskar Brothers. When money is received, no GST is collected. The entry will be bank account debit to Puskar Brothers.
rupees 2 lakh. Next, March 18. Purchase furniture for rupees 50,000 and payment made by check. So debit the furniture account 50,000. Furniture account debit 50,000. Again GST will be charged. So input CGST debit 9% of 50,000, 4,500. Input SGST debit, same amount 4,500. Furniture is purchased and payment made by check. So credit bank account to bank account 59,000. Okay, total 50,000 plus 4,500 plus 4,500. Write the narration, furniture purchased and GST paid. Next, on 20. Advertisement charges of rupees 20,000 paid by check. So it is advertisement expense debit. Advertisement expenses account debit 20,000. Again GST will be charged. Input CGST account debit 9% of 20,000, 1,800. Input SGST account debit, same amount 1,800. And payment is made by check. So credit bank account to bank account. Total amount is 23,600. Okay, paid for advertisement and GST. Next, on 22. Sold goods for rupees 1 lakh and received a check for the same. Check is sent to bank. It is cash sales. Check is received to debit bank account. Bank account debit to sales. Sales is rupees 1 lakh. So on sales, output GST will be corrected to output CGST. 9% of 1 lakh is 9,000 to output SGST. That is also same. Total 1 lakh 18,000. Write the narration, goods sold and GST collected. Okay, next. Next date is 25, 2018, March 25. Given commission of rupees 10,000 received in cash. It is income. So cash account debit to commission received to output CGST, SGST, because GST is collected on income also. So entry will be cash account debit to commission received $10,000 to output CGST account to output SGST account. So 9% on 10,000, 900, total 11,800. Okay, write narration, commission received and GST collected. Now, last is on 31st, March 31. Output GST adjusted against input GST.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी. फर्स्ट input CGST. See here, input CGST 36,000. Then input CGST is this amount 4,500. So plus 4,500. Then input, okay, only two. One more is here 1,800. See in this entry, input CGST 1,800. Plus 1,800. So this is 36 plus 45, 40 and 42,300. 42,300. Same amount will be of input SGST because both amounts are same. Plus 1,800. That is 42,300. Now calculate output CGST and SGST. Output CGST. See here, output CGST is 28,800 plus output here 9,000 and this is output 900. It will be 28 plus 900 plus 9,000. It will be 38,700. 38,700. Same amount will be of output SGST. 28,800 plus 9,000 plus 900. 38,700. Now see here, GST collected, which is output GST, is less and GST paid, input GST is more. So whatever is the amount of output GST that can be set off against input, जो बाकी input बचेगा, it will be called as input tax credit. अब जितना आउटपुट जीएसटी है सीजीएसटी और एसजीएसटी में वो है 38,700. सिर्फ इतना ही इनपुट सीजीएसटी और इतना ही इनपुट एसजीएसटी हम सेट ऑफ कर सकते हैं. जितना अमाउंट बाकी बचेगा जब बाद में सेल होगी, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट होगा, वो तब सेट ऑफ होगा. तब तक के लिए वो एक, हम उसको ट्रीट करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट. वी जस्ट सो एज ए नोट. तो जितना आउटपुट है एडजस्ट कर दो इसको. 38,700 आउटपुट, वो क्रेडिट था, आप कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दो. एंट्री होगी आउटपुट सीजीएसटी डेबिट 38,700 अगेंस्ट इनपुट. तो टू इनपुट सीजीएसटी सेम अमाउंट. नेक्स्ट आउटपुट एसजीएसटी डेबिट सेम 38,700 टू इनपुट SGST 38,700. तो whatever is the output that is set off against input, remaining input will be treated as input tax credit. अब वो कितना बचा है? 42,300 था इनपुट, उसमें से आउटपुट 38,700. लेस कर दो 6 और 3, 3,600 for CGST and same amount 3,600 for SGST. So total amount is 7,200. It will be treated as input tax credit. Input tax credit. So this is the amount of input tax credit. ये अमाउंट है जो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का राइट ऑफ नहीं हो पाया है. दैट विल बी रिटर्न ऑफ in next month when there will be more revenue and CGST and SGST will be collected. हाँ, अगर ये आउटपुट का अमाउंट इनपुट से ज़्यादा होता तो सारा सेट ऑफ हो जाता एंड रिमेनिंग बैलेंस ऑफ आउटपुट विल बी पेड टू द गवर्नमेंट. हम यहाँ बैंक क्रेडिट कर देते.
यहाँ आउटपुट कम है, इनपुट ज़्यादा है, तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ इनपुट CGST एंड SGST which will be set off in next month. Okay, now we will solve one more question, that is fourth question. Open next page, illustration number 4, page 10.12. This is illustration 4th. First of all, prepare the format of journal. May 15. Journalize the following transactions in the books of Kaveri Traders, Bengaluru. It is a case of intra-state sales when goods are sold within the same state. Again we will open CGST and SGST account. So 2019 May 15. Purchase goods from Nagendra and Sons of Belgaum of the list price of rupees 1,25,000 at 20% trade discount. So trade discount we are not to record, to deduct the amount of 20% on 1,25,000, that is 25,000. तो net purchase is rupees 1 lakh. 1,25,000 में से ट्रेड डिस्काउंट थी, 20% वो लेस कर दी. तो परचेज डेबिट बाई 1 lakh. Purchase account debit 1 lakh, and the rate of CGST and SGST is 6% each. So debit input CGST account debit 6,000, input SGST account debit same amount 6,000. And the goods are purchased for cash at 5% कैश डिस्काउंट. अब इसमें कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी थी, एंड 5% इज कैश डिस्काउंट. पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली बाय चेक. चेक से पेमेंट की है तो क्रेडिट बैंक अकाउंट टू बैंक. सम पेमेंट इज मेड लेस तो क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. देखो डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड ओनली ऑन नेट परचेज, नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ जीएसटी. जब भी हम कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं तो जीएसटी के अमाउंट पर कभी डिस्काउंट नहीं मिलती. जो नेट परचेजेज है 1 लाख उस पर डिस्काउंट मिलेगी. तो 1 लाख का 5% हुई 5,000, एंड रिमेनिंग अमाउंट इज पेड बाय चेक. तो 1,12,000 माइनस 5,000, इट मीन्स 1,07,000 is paid by check. तो credit bank account. Okay, write the narration: goods purchased and discount received. Okay, next entry on May 20. Sold to Arvind Patil and Company, हुबली. ये हुबली भी कर्नाटका में है, सेम स्टेट है. ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज़ 4 लाख है 25% ट्रेड डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट कर दो. 25% ऑफ 4 लाख इज रुपीज़ 1 लाख. तो 1 लाख लेस करो, कितनी सेल्स हुई 3 लाख. तो क्रेडिट द सेल्स अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 3 लाख. ऑन दिस अमाउंट आउटपुट जीएसटी विल बी कलेक्टेड एट 6%. तो क्रेडिट टू आउटपुट CGST account. 6% on 3 lakh is 18,000.
to output SGST account, same 18,000. The goods are sold at 3% cash discount also. 25% थी trade discount and 3% cash discount. Full payment received by check at the time of sale itself. सारा पैसा आ गया, चेक रिसीव हुआ है एंड 3% लेस करके आया है. तो when check is received, bank account will be debited. Bank account debit. Some discount is allowed. So discount allowed, account debit. Discount rate is 3% and discount will be allowed only on net sales, not on GST. So 3% of 3 lakh, that is 9,000. Wait for a while. This amount of sales is 3 lakh, 3%, so 9,000. And for remaining amount, check is received. The total amount is 3,36,000 minus 9,000. 3,27,000. Check will be received for this amount. Write the narration. Goods sold, check received, and discount allowed. Okay. Now, next transaction 30 May 22. Sold to Bangarappa and Brothers of Mysuru. ये भी कर्नाटका से है. Again CGST and SGST will be collected. Of the list price of rupees 2,50,000 at 20% trade discount. डिडक्ट कर दो ट्रेड डिस्काउंट. 2,50,000 का 150,000, तो नेट सेल्स इज रुपीज 2 लाख. तो क्रेडिट सेल्स अकाउंट बाई 2 लाख. टू सेल्स अकाउंट 2 लाख. ये सेल्स है ट्रेड डिस्काउंट लेस करके. नाउ आउटपुट CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6%. तो टू आउटपुट CGST अकाउंट 6% ऑन 2 लाख 12,000. टू आउटपुट SGST अकाउंट सेम अमाउंट 12,000. Now see, 80% of the amount received by check immediately. अब 80% अमाउंट आया है, 20% का मतलब क्रेडिट सेल्स है. 20% अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो 20% निकालें पहले. टोटल अमाउंट है ये 2,24,000 सेल्स प्लस GST. अब इसका 20% नहीं आया है, तो 20% कितना होगा? इंटू 20/100. तो दैट विल बी 0,844. 44,800 ये क्रेडिट सेल्स है. किसको सेल किया? बंगारप्पा एंड ब्रदर्स. तो डेबिट द रिसीवर. बंगारप्पा एंड ब्रदर्स डेबिट टू सेल्स. बंगारप्पा एंड ब्रदर्स डेबिट. दिस इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट 44,800. नाउ 80% कैश इज रिसीव्ड. तो जो कैश डिस्काउंट अलाउ करेंगे वो हम नेट अमाउंट पर करेंगे, सेल्स पर. GST पे कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं होगी. तो नेट जो टोटल सेल्स है वो है 2 लाख. इसका 80% रिसीव हुआ है, तो 1,60,000. जो 80% नेट सेल्स है, डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है 4%. तो 4% डिस्काउंट विल बी अलाउड ऑन दिस अमाउंट, दैट इज 6,400. डिस्काउंट इज अलाउड, तो डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. $6,400. And for the remaining balance, check is received, check is deposited into bank, तो you will debit bank account. आप ये क्रेडिट का टोटल कीजिए 2,24,000, उसमें से दोनों अमाउंट लेस कर दो. रिमेनिंग अमाउंट विल बी 172,800. 172,800. तो इन दिस वे you will record cash sales and credit sales.
and last 31 पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। बाकी GST की पेमेंट कर दी, तो इसमें पहले आप कैलकुलेट करो आउटपुट और इनपुट CGST। इनपुट CGST है, ओनली वन एंट्री इज देयर, 6000 ईच, 6000। इनपुट SGST is also same 6000. Now output CGST, ये दो अमाउंट है, एक तो ये था 18,000 प्लस 12,000, थर्ड एंट्री 30,000, सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट SGST 18 प्लस 12,000 दैट इज 30,000। तो जो 30,000 इनकम है उसमें से इनपुट 6,000 ईच एडजस्ट करो, बाकी गवर्नमेंट को पे कर दो, तो एंट्री होगी आउटपुट डेबिट करो 30,000। नेक्स्ट एंट्री इज ऑन 2019 मार्च 31। आउटपुट 30,000, तो आउटपुट CGST डेबिट 30,000, आउटपुट SGST डेबिट 30,000 टू इनपुट CGST 6,000, टू इनपुट SGST account 6,000 and remaining balance paid to government by check to bank account. So difference will be 60 minus 12, 48,000. Right, then output GST set off against input GST and balance amount paid to government. Okay, so we have done two questions, third and fourth. You are to solve these two numericals from exercise. In next video lecture, we will continue the same chapter. Till then, goodbye students. Have a nice day.